Ladies and gentlemen, my name is Sulmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life. Thank you so much for showing such immense and generous amount of support and love towards the previous episodes. We truly appreciate it. In case you haven't subscribed to our YouTube, SoundCloud, and Spotify channels, please do go ahead and do it now so you don't miss out on any notifications. The guest that I have on the hot seat today is a person who brings me much joy. While speaking to her, I realize that fairy tales do come true. But they don't come true with the touch of a magic wand. They come true with a lot of perseverance, a lot of patience, literal sweat and tears, and hard work that eventually does pay off. She is Director HR of the 8th largest ICT export company in Pakistan. It gives me immense pleasure to welcome to the hot seat Javeria Syed. Javeria, welcome to the hot seat. Thank you for having me here. Very, very welcome. Javeria, we're going to start right at the beginning, and I want you to be as candid with us as you possibly can be. You started with a handful of people at Contour, and now it's 1800 plus. You started from a simple background where now you are heading so many portfolios. You came from a small city and now you're at the financial hub. Overall, ये काफी intensive change रहा है from the quiet girl that you used to be. What has your journey been like? So I'll start with the background a little before I joined Contour. Okay. So it was my first job. So I started there as a management trainee. Okay. And then I spent a little over a year there before I joined Contour. Okay. So at that time, of course, if I see and if I compare it with what I am today, there is a huge difference. Okay. So in that first job, I used to be a girl who was afraid of even talking to people. Still, despite I was in HR, but whenever I was asked to call the candidates, I would look back here and there if I'm surrounded with people, and I would be reluctant in even calling to someone. Okay. So I used to take a little bit time, relax and see, okay, I should still see that कम से कम कुछ लोग कम हो जाएं, एक दो है तो सही है, and then from that point to here. Okay. So I would say lot of evolution, lot of hard work. A lot has changed in me as a person, as a professional. Okay, wonderful. Thank you for giving us that background story. Now, HR is a very diverse field. And HR is literally that one person जिसको सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं. अम्मा का, अब्बा का, दोस्त का. You're the shoulder to cry on. You're the person who, not in the literal sense, but is punched if somebody is angry. You know, all kinds of confessions, all kinds of expectations, etc. Be it recruitment, be it organizational development, whatever the aspect of HR may be. तो ये तो चीज़ कुछ हद तक लोग समझते हैं, लेकिन आपके लिए HR इतना important क्यों है that you spend a good amount of your life dedicated to growing in this field only? So, especially in my journey with Contour, and I would say because most of my career, I have spent in Contour, and there has been a lot of learning in terms of evolution of HR in Contour as well. Okay. So that also made me, or I should say, attracted me towards HR more, learning more, getting in depth of things. Okay. Because when I started with the company, we were a small group. So things tend to be very different when you are working in a startup or in a small company. And as we grow, the needs are different. We cannot run things the same way we used to run when we were like 30, 40 people. Right. So for me as a person, as a professional, this growth has been really holistic, and that made me to stay in the field for a long time.
From one confident, independent woman to another, honestly, I'd like to ask you. Glass ceilings की बात अक्सर होती है कि women have to break the glass ceilings, and in a boardroom, there's very few women who, are present. We also talk about औरतों को एक box में confine कर दिया जाता है when it comes to their roles and capabilities. And I feel that हाँ, शायद एक time था जो, ऐसी मुश्किलात ज़्यादा सामना करनी पड़ती थी ख़वातीन को, but times have changed. Times have changed because women have paved that way for other women also. So ab I think come reasons hai for women to come up with such a background story, although har ek ki kahani fark hoti hai. What do you feel, Javeria? Do you think that gender ke basis pe kabhi kabhi खुद की capacity, खुद के potential को लोग limit कर देते हैं? So there are different things into the mix. एक, as an individual, regardless of whether I am a woman or man, how much I want a certain thing, how much passion I have, how much I am willing to put efforts in order to gain something. Of course, times have changed. Previously, आपको ज़्यादा resistance देखनी पड़ती थी. But again, trend is changing. It's still changing, I would say. Okay. But again, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे mechanism में जो matter करती हैं. As I mentioned, firstly, as an individual, आप कितना willing हैं, right, और क्या आपकी what's your target? How much motivated you are to get to your ultimate target. Secondly, the environment you get. बहुत मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट कितना कंड्यूसिव, कितना सपोर्टिव है, टू इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू गेट देयर. इट कैन नॉट बी जस्ट an individual, it cannot be just environment. It's a combo of both. Now, I remember that when we were talking off the record also, one very interesting thing you highlighted, and that is that if you do get an opportunity because of your own hard work and potential, never let your age or your gender get in the way of that, because शायद एक subliminal messaging होती है हमारे दिमाग में, हमारे कल्चर में, कि एक certain age तक आप certain चीज़ें कर सकते हो, या certain gender roles होते हैं जो कि define किए जाते हैं. तो उसमें दोनों sides आपने mention किए थे होते हैं ना, कि अगर आपको एक position मिल गई है, you've earned it, तो then you can't expect leverages. तो उसको थोड़ा सा और elaborate कीजिएगा. Of course, yes, हम ये बात करते हैं कि there are relatively less opportunities for women, but if we are getting one, and I would say I was fortunate enough to get one. So if we want that we should be given equal opportunity, then of course we have to deliver at the same level. So if I share my example, of course, when I joined the company, there were very few women in the organization. Today, it's a lot more. Okay. Yes, I was the only woman at that time, and even today in our senior management team, I'm the only woman. Okay. But again, as you mentioned, through that journey, if I have reached to some point, it's not like I can say, okay, I have reached to that point and I can do whatever I want. No, it requires a lot of dedication, a lot of hard work. I would say the ownership element is the biggest thing. You cannot just stay quiet and happy. Okay, there are people who can take care of things. You have to be on your toes every time. Okay. And again, I would like to add, that's regardless you are a man or women. If you have earned a certain position, you have to be persistent in that, in the efforts, in the ownership that you are taking. Because you have, worked towards it and you deserve it, but then you have to make sure that you maintain that, because there's a lot of expectation, right? अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन बात है कॉन्टूर के बारे में. वैसे तो बहुत सारी बेहतरीन बातें हैं और बहुत सारे बेहतरीन लोग भी हैं, and that is that Contour is one of the very few companies of this stature in Pakistan जो कि एडवर्टाइज करते हुए ये नहीं लिखता कि Tier 1 या Tier 2 यूनिवर्सिटी की कम से कम क्वालिफिकेशन हो,
या necessarily X number of years of experience हो या फलानी certifications at minimum की भी हो. There is a JD that is given, there is an expectation, but ये hard and fast and almost I feel sometimes के थोड़े discriminatory किस्म के references होते हैं जो कि बहुत सारे बहुत काबिल लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अच्छा हम अप्लाई करें भी तो फ़ायदा नहीं है बिकॉज हम फलानी यूनिवर्सिटी से हमने तालीम हासिल नहीं की हुई है. तो एक तो कूडोज टू कॉन्टूर के आप इंसान के इंडिविजुअल पोटेंशियल के बेसिस पे मौक़े फ़राहम करते हैं. लेकिन कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये तो बहुत ही ब्रॉड पैरामीटर हो जाता है. तो रिक्रूटमेंट में फिर क्या चैलेंजेस आते हैं? मुझे लगता है कि जो एक फैक्टर जो हमने ऐड, अगर हम एडिशनल फैक्टर ऐड करते हैं कि XYZ यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, आई थिंक फ्रॉम रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव वो शायद आपके प्रोसेस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है. इफ़ वी कीप इट ओपन, अगर हम उसको इक्वली सबके लिए ओपन रखते हैं, इट मीन्स कि हम ज़्यादा लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. देयर कैन बी पीपल, फॉर एग्जाम्पल एक कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसका एक टारगेट हो कि मुझे इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करनी है. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, बट फॉर एनी रीजन, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, मे बी किसी और वजह से वो उस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते. राइट. एंड अगर उन्होंने किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो कि उनके लिए अफोर्डेबल थी या किसी और रीज़न की वजह से एक बेहतर चॉइस थी, उन्होंने उसके लिए ऑप्ट किया, वहाँ से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया. We as an organization and I as like personally also think कि ये नाइंसाफ़ी है अगर मैं उस इंडिविजुअल को equal opportunity नहीं देती just because he or she has actually studied from a different university. Right. तो एक तो ये चीज़ है कि ज़ाहिर है we should give equal opportunity to like everyone who is applying. और secondly, yes, ये एक फैक्टर ये भी हम इसको भी लाइक कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते कि एट टाइम्स certain business school or certain university producing a certain quality of candidates, but it cannot be true always. Right. So हम उस skill set को test करने के लिए या उस individual की capabilities को बेहतर तरीके से analyze करने के लिए एक process है, एक standard process है जो कि किसी फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट आया है वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेगा. कोई एक डिफरेंट लेवल की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया और उसने अप्लाई किया तो वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेगा. इवन इन सम केसेस कुछ एक्सपीरियंस, एंड व्हेन आई से एक्सपीरियंस, काफ़ी सीनियर लोग जिनको हमने अपने प्रोसेस में ऐड किया, एट टाइम्स we had to give them additional explanation to convince them कि आप इसी process से गुजरेंगे, because the thing that we used to hear कि मैंने इतने साल experience ले लिया, इतना मैंने काम कर लिया और अभी भी मुझे इस assessment से गुजरना है. Right. So the point of having that process is to be transparent and to give equal opportunity to all the people who are like becoming part of the process. You know, it's delightful to hear. That doesn't matter. एक तो background के हिसाब से आप लोग judgmental तो हैं ही नहीं. You're very clear. You're very transparent. But especially what brought a smile to my face was when you said senior positions के लोगों को भी. Because काबिलियत तो किसी में भी हो सकती है. It can be somebody जो entry level की position में आ रहा है and may be able to ace a test. And there may be somebody who, for whatever reason, may have had certain X number years of experience but may not necessarily qualify. So that's fantastic. अच्छा, एक और बड़ी inside scoop मुझे मिला आप लोगों के different team members से बात करते हुए कि यहाँ पे everybody has the right to, because open door policy है, to walk into the door and suggest what kind of HR activities they want. Is this true? कि आप लोग खुद HR सिर्फ नहीं डिसाइड करता है बट कोई भी कॉन्टूर सॉफ्टवेयर का टीम मेंबर, फैमिली मेंबर जो है वो सजेस्ट कर सकता है, एंड अगर इफ इट वर्क्स वेल, द आइडिया इज कंसिडर्ड टू बी वर्दी,
तो वो actually implement हो जाता है. Absolutely. Wow. It's because we want to have that culture Okay. जहाँ पे एक two-way communication है. Right. We just don't want it to be a one-sided thing कि हमने as a team एक चीज decide की and we just implement that. So we want to include people, we want to have ideas, and we strongly believe कि when there are more people, more diversity, so you get a lot new ideas, new element. So that's really important और वो जरूरी भी है. As an organization, आपको अगर grow करना है, so you have to have different ideas in that whole mix. So in the journey, it happened like अगर मैं बिल्कुल early time की बात करूँ, तो I would say even before I actually joined, so Right. there was no HR person, Right. and people were actually driving that. Right. And as we started to grow further, so we started to have more people, more combination from different age groups, from different backgrounds, और उसके साथ साथ हमारे पास feedback भी आता गया. So it's a mixture of both. At times, our team, our HR team, management team, or administrative team, they bring ideas. At times, people are bringing those ideas. It's not 100% that we can always go for either. Right. But at times, we brainstorm. We see how much executable that plan is. Okay. And after making certain tweaks, we just then go further. So it's not set in stone, you know, that flexibility and that privilege, I would say, that you give people to जो एक अक्सर मिशन स्टेटमेंट्स में या वैल्यूज में, कोर वैल्यूज में कंपनीज का होता है, यू स्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, लिटरल सेंस में कि आप लोग वाकई में लोगों को इंक्लूड करते हैं. Now people look at the power suits and, you know, the fancy cars and the designation, लेकिन शुरुआत तो सिमिलर ही लोगों की होती हैं. कभी तो कोई आंसू टपका होगा, कभी तो दिल चाहा होगा लैपटॉप उठा के फेंक दें जवेरिया. ऐसी भी कोई कहानी होगी? आंसू टपकने वाली जरूर है. अच्छा, ओके. और वो ऐसी है कि I still remember it today. Okay. So it was my experience here in Contour. अच्छा, okay. Early days, or I still remember sitting in front of my manager and getting some really tough feedback. Okay. Again, that's the time जहाँ पर आप सोचते हो कि is it really worth it? अच्छा, okay. और कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि शायद छोड़ देना चाहिए सब. That's not either ये जगह आपके लिए सही नहीं है या आप इस जगह के लिए सही नहीं है. तो बिल्कुल ऐसा हुआ है. एंड yes, आज people know me in the capacity of head of HR for Contour, but उसके background में बहुत सारी working, बहुत सारी efforts and investment of time, ना सिर्फ मेरी अपनी तरफ से, but वो लोग जो मेरे साथ starting से associate रहे हैं different capacity, और especially वो लोग who were actually willing to put that effort because they see that there is a potential, and if they'll share the feedback, वो अगर मुझसे share करेंगे कि मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ, तो I will do it, and that's, I think that's the core of it. लेकिन फीडबैक हमेशा ज़रूरी नहीं है कि you know किसी रिबन के साथ दी जाए. कभी कभी बड़ी hard hitting feedback होती है, and that's a natural part of the process, right? Absolutely. And I think बड़ा important factor play करता है कि वो feedback आपको किस तरीके से दिया गया है. Of course, if you are making a mistake, आपको बहुत हंस के मुस्कुरा के वो feedback नहीं मिलेगा, but वो feedback ज़रूरी है. और वो एक balance बहुत ज़रूरी है जहाँ पर उसकी एक strong expression है, but उसके साथ साथ एक respectful element भी है. Because
आपको चीजें सही भी करनी है, बट मेंटेनिंग दैट लाइन कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे. ठीक है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को जब वो फीडबैक दे रहा है, सो there might be a very strong reason why a certain individual at that place and why the second one is at a different place. Right. तो बहुत important factor play करता है कि वो feedback किस तरीके से दिया गया है, and how much being a senior that person is actually willing to bring the positive change. तो आपने उसको पर्सनली नहीं लेना होता है. यू हैव टू बिल्कुल. अंडरस्टैंड कि आपके भले के लिए है. अब पर्सनली लेने की बात की जाए तो इमोशनल रेगुलेशन is something which I think the more people know about it, the more successful they will be in lives, personal and professional. और हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप लोगों की पर्सनालिटीज़ और इमोशंस को बेहतर समझी हैं because of something that you studied, something that you made an effort to study and understand. उसके बारे में please बताइए. So it was a mind sciences training that I did, and वो मेरा एक personal shock. It was not required, but वो मुझे मेरा एक interest था कि मैंने पढ़ना है, and I would say that was a life changing event for me. Despite the fact कि the time जिस वक्त वो training मैं कर रही थी, at that particular time even I was going through a personal situation, and at one point I was even thinking whether I should quit that training and should come back to Pakistan to be with my family. So I would say I got a very different, very strong perspective of human and their behavior in a certain situation. Sahi. So that would I think that's a learning, and after completing that training, I am able to better relate things. A lot of those examples I see every now and then. So that I would say that was really a life-changing experience for me. Wonderful to hear that, because behavioral sciences can really give you can help put together what you already know, but can put it into perspective. And I think that's what happened with you. अच्छा, हमने पहले चूँकि रोने की बात की थी, तो रोना हमेशा गम की वजह से नहीं होता है. There are tears of joy also. When was the last time that tears of joy came to your eyes? I would not say tears of joy, but I would say I got goosebumps. Okay. It was in the ICT Awards. And at that time, like, we were kind of expecting that we might get an award, like Contour might get that award. And we were sitting here in that function, and we were sitting separately. So different management team members, we were coordinating on messages. And at that time, Bilal said, if we are to get this award, you all need to go there and gather there. And finally, Contour's name was announced, and Bilal was telling all of us, go. And when I went there on the stage to collect the award, my other team members, directors, they said, no, you should collect that award. So that was a really, I would say, very special, memorable moment for me. Okay. And right after that, we Canadian High Commissioner for there, and she in her speech, she gave the reference of like calling me a very young woman heading the HR of Contour. So again, that was a really, really good, memorable moment for me. बदलती हुई दुनिया है और आए दिन नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते जब नई नस्लें जो हैं वो उन चीज़ों की तरफ भागी चली जाती हैं. करियर्स की जहाँ बात की जाए, एक वक्त था कि 10-10 साल लोग जो है वो सर्टन करियर्स को बड़ा इम्पोर्टेंट समझते थे और तरजीह देते थे, डॉक्टर बनना या MBA करना, इंजीनियर बनना एट्सेट्रा. अब चीज़ें बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रही हैं, तो शायद कुछ गलत फहमियाँ हो या मिसकंसेप्शंस हों लोगों के दिमाग में, ख़ास तौर पे जेन ज़ी के दिमाग में, कि कुछ करियर्स अब ऑब्सोलीट हैं, दे आर नॉट दैट रेलिवेंट एनी मोर. शायद लोग HR के बारे में भी ऐसा सोचते हों.
तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमें बचपन से एक बात कही जाती है, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अ, आजकल आप हर दूसरे बच्चे से अगर पूछेंगे कि क्या बनना है, तो आई वुड से कि 8 7 8 10 में से आपको कहेंगे कि उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। राइट। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एट टाइम्स उनको उसका एक एनवायरनमेंट अट्रैक्ट कर रहा होता है, और एट टाइम्स उनको कोई और चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है। कभी कभी उनका कुदरती एक किसी एक एरिया में वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम जो है वो हुजूम के साथ चलना ना शुरू कर दें। हम ये सोचें कि मैं मेरी इनफरादी तौर पर क्या एक एज एन इंडिविजुअल मैं क्या चीज़ बहुत अच्छी कर सकता हूँ या कर Right. सकती हूँ, राइट। और क्या मुझे उसको थोड़ा सा और रिफाइन, थोड़ा पॉलिश, थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ वो करूँ जो बाकी सारी दुनिया कर रही है। तो पहली तो ये चीज़ है। सेकेंडली HR। सो HR में कुछ जगह पर आपको आज भी ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि HR का काम सिर्फ सैलरी बनाना है। कुछ आपको ये भी मिलेगा कि उनका काम सिर्फ लोगों को रखना या निकालना है। बट मैं ये कहूँगी कि ये इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत Right. ज़्यादा इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। सो यस, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए वो है पेशेंस। सब्र बहुत ज़रूरी है, और वो आप कंप्यूटर्स की फील्ड चूज़ करते हैं, आप HR की फील्ड चूज़ करते हैं, आप कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं, आपको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, सब्र से, हौसले के साथ स्लोली अपने मूव्स करने चाहिए। और ये सिर्फ किसी जॉब चेंज की आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। ये बहुत सारी आपकी अदर देन वर्क भी आपकी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में ये लॉजिक अप्लाई होती है। तो जल्दबाजी जो है वो आई थिंक उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। सही, जो कि हमें नई जनरेशन की वांटिंग ऑफ थिंग्स क्विकली में हमें ये टेंडेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा नज़र बिल्कुल। आती हैं। रैप अप करने का वक्त आ गया है जवेरिया, तो एक सवाल तो बिल्कुल मतलब लाजमी बनता है, एंड दैट इज़ पर्सनल एस्पिरेशंस। कोई बिग टाइम ड्रीम्स, कोई अनफुलफिल्ड विशेस which you want to take out time for and definitely do? तो मैं काफ़ी लकी रही हूँ बहुत सारी चीज़ों में। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। एक चीज़ जो स्टिल मेरी अभी लिस्ट पर है, Okay. और वो है स्काई डाइविंग। अरे वाह! सो आई नो एट टाइम्स वो आपको देख कर लगता है कि थोड़ा सा खतरनाक भी है, बट दैट्स समथिंग आई रियली रियली वांट टू ट्राई। And it doesn't scare you at all to think कि क्या possibly हो सकता है? हो सकता है, बट सिर्फ उस हो जाने के डर की वजह से मैं उसे छोड़ नहीं सकती। सो आई हैव टू ट्राई। इंसान कभी कभी अपने आप को महरूम कर देता है इस अननोन के कॉन्सेप्ट से और फियर कि पता नहीं क्या होगा, एंड यू राइटली सेड राइट नाउ कि इस डर से सिर्फ मैं अपने आप को रोकूंगी थोड़ी। सो इसी नोट पे थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस जवेरिया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई होप आज की कॉन्वर्सेशन से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Ladies and gentlemen, till next time, this is me, Sulmeen Ansari, saying thank you and Allah Hafiz.